No. Yeah, Broadcast going. is live. Yes, Yes. right. Hi everyone. Welcome to another Blue Circle workshop. We have Neeraj with us today. Neeraj, can Hello, you introduce? everyone. Yeah. Hi, everyone. I'm Neeraj Dhanwani. I'm a type 1 diabetic since the past 7 years, and I live in Mumbai. And I'm Rohan. I live in Delhi. I've been T1D since the last 13 years. And today Wow. we'll be discussing basal testing. And we'll just wait for a few seconds for everyone to join in. I'm just seeing where we can see the comments. Yeah. I see a Okay. chat Yeah, comments. you can see on the next comment Yeah, section है वहाँ पर. comments. हाँ. Great. So we'll just wait for a couple of minutes and for everyone to join. ये वर्कशॉप पूरा हिंदी और इंग्लिश में रहेगा. हम आज बेसल टेस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपकी ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए. और मेरे साथ नीरज भी हैं आज, तो हम उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे. आप में से कोई आपको कोई भी सवाल हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन सेंड इट टू अस ऑन व्हाट्सएप, यू कैन पुट इट ऑन द कमेंट्स and just wait for a few more minutes. So while we do that, Neeraj, how's your sugars these days? It's good. Last 1 week it was down. I was down with a viral, so that time it was a little haywire. But yeah, now it's returning back to normal. And did you increase your basal when you had viral? Um, I wanted to. I just increased my night basis since I'm on the pump. So because I was seeing a lot of happening after 6 a.m. So that is the Mhm. time I increased my basal, and then fasting eventually came under control. And today we'll also discuss. Hi Sajan, hi Ayaz. Today we'll also discuss कि whenever you feel sick, right? How do you change your basal dose? और night time में आपको basal कैसे manage करनी है? We'll also discuss that. And Right. feel free everyone to if you have any questions, put it in the comments in the chat below. So we'll just get started. So what is basal? Basal होता क्या है? हम किस चीज को basal बोलते हैं? Basal होता है आपका long acting insulin, right? और उसको इस तरह से समझिए, आपकी डायबिटीज मैनेजमेंट का बेस है वो बेसल. तो उसको आप इस तरह से मानिए, उसको बेसल मैं इस तरह से देखता हूँ. एंड नीरज, यू लाइक टू एक्सपैंड ऑन कि बेसल कितनी तरह की हैं Hmm. और. Frankly, basal is one of the most underrated insulin that a person who's on insulin should be. So bolus is what you take along with your meals, and basal is your background insulin that keeps your when you're not having food, and still your liver will put across a lot of glucose into the body. So what gets it under control is your basal insulin. So for that, for your sugars to be round the clock under control, your basal rates need to be set properly. बेसल रेट्स प्रॉपर्ली सेट होने चाहिए उसके लिए. उसी के लिए हम आज चर्चा करेंगे कि बेसल टेस्टिंग कैसे करना है. अगर आप दूसरे वेरिएबल्स को हटा दो, जैसे फूड, एक्सरसाइज या जो भी अदर फैक्टर्स है जो आपके शुगर्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो आपका बेसल से ही सब कुछ ठीक रहना चाहिए. आपका नॉर्मल डे चलना चाहिए ओनली विद बेसल इंसुलिन. अगर आप कुछ खाना नहीं खा रहे हो, देयर शुड बी मिनिमल फ्लक्चुएशंस इन योर sugars, and basal should manage that. सो बेसिकली आप जो नाम सुनते हो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के, जैसे लैंटिस, ट्रेसिबा, ऑल दीज आर योर बेसल इंसुलिन. सो ये ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काम करते हैं. किसी किसी को दिन में 2 बार लेना पड़ता है. दैट इज विद योर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन. लैंटिस, I know people who split it twice a day. Tresiba, which is a even longer acting insulin, which works for around 24 to 30 hours, uh, which is to be taken normally taken once a day. तो जो नीरज बता रहे हैं कि आपकी लॉन्ग एक्टिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन टाइम आता है. आपका एक इंटरमीडिएट एक्टिंग है, एक लॉन्ग एक्टिंग है और एक वेरी लॉन्ग एक्टिंग है.
तो इन्हीं में ही Yes. डिफरेंट आ जाते हैं. जैसे आप लैंटस वर्क्स फॉर ओनली 18 आवर्स, 18 और hours. Yeah. आपका लेवेमीर सिर्फ 12 आवर्स काम करता है, तो लेवेमीर आपको दिन में 2 बार लेना पड़ता है. प्लेसीबा वर्क्स मोर देन 24 आवर्स, तो 24 वो hours. आपको Right. दिन में एक ही बार लेना है. तो वेन एवर यू सी, अब जब भी आप बेजल की कोई इंसुलिन स्टार्ट करते हैं, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ एक्शन टाइम क्या है उस स्पेसिफिक Right. इंसुलिन का, कितने टाइम बाद स्टार्ट हो रहा है एंड व्हेन इट एंड्स, और पूरा टोटल ड्यूरेशन क्या है. एंड लॉट ऑफ टाइम नीरज पीपल से कि मुझको हाइपो हो रहा है या मेरी शुगर लो है, तो मैं बेजल लूं कि ना लूं, राइट. तो आपकी उस टाइम पे बेजल लेने से आपकी शुगर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. इट विल नॉट इफेक्ट योर Right. शुगर्स Yes. if you have low sugars and you take basal, because basal will start only after 2 hours. Right. Yeah. So if you have low sugar in the night, I would suggest you can take your basal once you take your correction. मतलब आपने कुछ भी sweet ले लिया, once you taken that, you can take your basal. That will not affect your sugars immediately. Right. Yes. It takes a lot of time to kick in, and because it's a long-acting insulin, you won't have that much of an initial impact like a bolus insulin will have. Some more people So, have joined us. Hi everyone. We are discussing basal testing today, and hoping to have few more questions and interactivity from the audience. And right. Neeraj, also I'd like to know from you कि पंप पे कैसे बेजल होता है, आप कौन सी इंसुलिन यूज करते हैं पंप में, वो कैसे बेजल एक्ट करती है. So when you're on the pump, there is only one insulin which acts as your bolus as well as your basal. In my pump, I'm on the Novo Rapid. Uh, so uh, so आपका pump क्या करता है? आप एक rate पहले से define करते हो. You can have multiple rates on the pump. So that is one extra benefit on the pump. आपको 2 घंटे में हर अलग अलग रेट चाहिए. अकॉर्डिंगली वो बेसल टेस्टिंग जैसा So हम डिस्कस करेंगे, can वो you बेसल explain, टेस्टिंग. Neeraj, what do you mean by rate? Rate as in, so there are 24 hours in a day. So basically, if you're on four different rates, so say from example, the day starts at 12, so 12 to 4 is you will have a different rate, and from 4 to 10 again it's a different rate, and so on. So rate is the amount of your insulin that your pump will throw every hour. So basically, like if you're on the syringe or on the pen, you'll take say a 12 units of Tresiba, for example. So what your pump will do, which the rate which you will set is, it will throw point 5 of basal insulin, that is Novo Rapid in this case, every hour into your body. So what pump does is that वो आपकी जो बोलस इंसुलिन है उसी को ही थोड़ा थोड़ा डालता रहता है इन अ बेसल Thoda फॉर्म ऑफ. thoda, right. Yes. So, hi Pushparaj, we'll speak more in English. Ayaz, hello. Neeraj, can you fix your camera somewhere? कहीं पे रख दे ताकि वो fix हो थोड़ा, या if ठीक है, possible. या Hi Anita, great. Uh, so lot of times what happens is that some parents, right, they or in fact us also, when I was also struggling to manage good blood sugars, I would get scared when I would check my sugars at night and it would be around 190, right, कि मेरे को रात को हाइपो ना आ जाए. And राइट. I've seen some people be take it a little bit higher, more than that. They prefer 150, 160, right? So या उससे आपकी बहुत बहुत डिफरेंस आ जाता है सुबह मॉर्निंग शुगर्स में, राइट. योर एंड राइट. पीपल आल्सो हैव दिस क्वेश्चन, व्हेन शुड आई टेक माय बेसल, शुड आई टेक इट इन द नाइट बिफोर स्लीपिंग, शुड आई टेक इट इन द इवनिंग, मैं बेसल लूं कब. So basically, again, that is with your lot of what time you have dinner, and obviously these things don't impact your basal will not impact your meal times, but it's always beneficial to just take it 2-3 hours before bedtime. Is what when I was on Tresiba is what I used to follow, and even that was my doctor's advice, not to just take it before you sleep, uh, to take it 2-3 hours before you go to sleep. So if you're just taking your basal insulin once a day or even twice a day, the timings you should try to keep it fixed at the same time each day, not try to alter every single day. Got it.
And a lot of people are here are T2 as well who are listening to us, who have type 2 diabetes. Sometimes they are also suggested by their doctor to have a basal insulin to manage their Yeah. sugars well. And initially few years में when I was facing ladder, right, I was on pills and I was on basal for around 2.5 years. तो Okay. वहाँ भी मेरे को अवेयरनेस बहुत कम था कि बेसल टेस्टिंग करना है, बट फॉर आवर T2 friends who are also watching, if they are using basal insulin, this can be a very important tool in managing your diabetes well. Right. Yes. So we'll get started. तो basal आप लगा रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं, यू गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर टेल्स यू कि आप basal is, doctor sets a dose for you, right? And after Right. that we go back to doctor, he changes and all, but we never test it out. हम लोग उसको एक बार टेस्ट करके नहीं देखते कि जो हमको हमारी जो बेसल डोज है वो कैसे चल रही है. तो बराबर. today in basal testing we want to see that your sugars stay stable throughout 24 hours when you are using the basal. Right. Yeah. To तो avoid a lot of मेरा hypos and hypers, right? Basal testing is important. So, so I think the first question that people will have, when should you do a basal testing? right. So I think whenever there is a, say, you are there's a change of weather is when I, so it's always beneficial to have it done tested once in few months. Basically, when there's a change of weather, you have a Yes, lot of changes in your physical activity, when your daily routine changes. Say if you're working day shift and suddenly you're shifting to a night shift, and your body is used to you sleeping in the night, but then again you're shifting to a night shift. So that is one time when your daily routine like changes, any changes to your routine, you should do a basal testing first. uh, correct. yeah. And what I have experienced, I have to use a different basal in summers versus winters in Delhi. तो मेरा समर में तो थोड़ा कम रहता है मेरी बेसल डोज, मेरी विंटर्स में बढ़ जाता है. सो आई हैड टू डू अ बेसल टेस्टिंग एंड सी लाइक हाउ मच डू आई नीड टू इंक्रीज डिक्रीज व्हेन दिस हैपेंस. Right. Yeah. And for people who are also seeing, apart from this, people who see unexpected hypos and hypers, right? Even after meals, they see that, okay, before meals also they see there is a hypo or hyper. They also need to set their basal correctly so that they avoid getting too much hypo and hyper. Right. Uh, Yeah. right. और when do you do basal testing? Is basal testing से पहले क्या करें? Pre basal testing we can talk about that. You should not do basal testing just after eating a meal, right? You need to have a gap Right. of at least 4 to 5 hours जब आपकी बॉडी में कोई भी बोलस इंसुलिन नहीं है, आपको तब अपना Yeah. basal testing start करना है. That's when you Right. have to Yeah. start your basal test. Yeah. And So basically, wait, yeah, 4 to 5 hours after you have taken your bolus insulin, and after your meal, you have finished like 4 to 5 hours. And if you have had a high protein or a high fat meal, I would suggest to wait even longer, because yeah, the protein and fat will take a lot of time to get digested. So those fluctuations that you might see in your sugars while you're doing a basal testing might not be because of the basal insulin, but it might be because of the food. So the main thing that you're doing a basal testing is you want to eliminate other variables. So if so, the food variable doesn't get eliminated when you have had a high protein and a high fat meal. So so avoid doing basal testing when you have taken such a meal, and maybe you can postpone it to the next day. और तो जैसे नीरज ने बोला, खाने के बाद कुछ घंटे बाद आप अपना बेसल टेस्ट कर सकते हैं, और बहुत ही प्रोटीन या फैट लिया है तो थोड़ा और लंबा इंतजार करें. एंड इफ यू आर सिक देन डोंट डू अ बेसल टेस्ट. अगर आपको लग रहा है Right. आपकी तबीयत खराब है तो आप उस टाइम पे बेसल टेस्ट मत करें. क्योंकि उस टाइम पे आपकी वैसे ही ब्लड शुगर्स बहुत फ्लक्चुएट करेगा. और Right. इफ यू हैव डन सम स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, जैसे मैं रनिंग करके आया या कुछ वेट लिफ्टिंग करके आया, उसके बाद आपको बेसल टेस्ट नहीं स्टार्ट करना है. यू कैन नॉट स्टार्ट इट आफ्टर रेगुलर एक्सरसाइज.
because that also Right. affects your sugars. So we Yes. want to make sure that our blood sugars are stable and bolus is not affecting that before we start a basal test, is what we are trying Right. to achieve. Yes. And before we go into the actual basal test, uh, what is Neeraj, what was the benefit that you got from basal testing? आपको फायदा क्या हुआ? When did a basal testing, when I initially started, was first I had done to eliminate the dawn phenomenon, whether my ra- rates in the night are correct. So once that was done, it helped me eliminate a lot of hypers, because in spite of me taking my correct bolus, my sugars were still high post meal. So first I thought that it's because of the incorrect bolus. I might not have estimated the correct carbs. But then eventually when I tested, I came to know that the basal rates were a little low than what it should have been. So it will help you a lot. It will give you a lot of stability to your blood sugars, is what I have achieved in the past. And Great, great. if you're trying to lose a lot of weight, if weight is a problem for you, so basal will help you achieve that, because it will keep your sugar stable, and you will be able to fast for a pretty longer period of time if you're trying to do that. Correct. And I started basal testing because I was seeing Nupur's had written a blog, basal testing ka. Shout out to Nupur here because she taught us basal testing basically. And she would show us a straight line, right? And we would be like, Yeah, ये कैसे होता है? ये तो सपने में भी नहीं आती ऐसी straight line तो मेरा. सही बात है. So, uh, I was able to achieve that straight line through basal testing again and again and trying to see that what is the correct dose for my body, right? Right, Once you get that correct dose right, तो आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं थोड़ा, but you have to achieve that correct, what is correct dose for your body, right? right, And yeah, you also need to do basal testing if you have lost a lot of weight या आपने weight gain करा है, then also you need to do basal testing because उससे भी आपका insulin absorption पे effect पड़ता है. That affects your right, insulin yeah, absorption as well. So yes. let's get started. How to test your basals. Uh, so Neeraj, you can go ahead. Like मैंने खाने के 4 घंटे बाद can I start my basal test and what time do I start my basal test? How much fasting should I do? So basically, you have to test over a period of 24 hours. So if you think, obviously, it's not practically possible for everyone to be fasting at a stretch for 24 hours. So you can start at, say, take a fasting of 4 to 5 hours, and then eventually over a period of 3, 4 days, you can complete your basal testing. Uh, so what I do is, whenever I have to do my basal testing, I first start with my night, because fasting there is simpler because you're going to be sleeping there. So I start with the night time, is when so you're not going to be having food in the night, and once you've finished your dinner on that day, have an early dinner. So around 10 p.m. or whatever time you're comfortable, you can start your basal testing and goes on till morning. So at that I'll frame, just interrupt you, Neeraj. Sorry. So people who are yeah, just joining us right now, we are discussing basal testing. Rajika ने भी पूछा है what is basal testing? Basal testing is we are trying to test our basal dose की how much long acting insulin is correct dose or not. right, क्योंकि हम yeah, वंस यू हैव टेकन अ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, लाइक आपने एक बार लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लगाई आपको हाइपर, और उस टाइम पे आपकी बॉडी में कोई बोलस इंसुलिन नहीं है और आपने खाना नहीं खाया है, तो उस टाइम right, पर आपकी शुगर स्टेबल चलना चाहिए, वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए. ये हम करते huh, हैं, वी डू दिस टू अंडरस्टैंड द करेक्ट डोज फॉर आवर बॉडी एंड टू कीप आवर शुगर्स इन रेंज थ्रू आउट द डे. How much basal dose is correct for our body. So right, we fine tune it with our doctors as well. So once we do a basal testing, we'll see, okay, we need to fine tune our dose. We can also talk to our doctor and then we can go ahead and do that. Yeah. तो right, नीरज जैसे बता रहे थे, like he was saying कि uh, he does it at night and I also prefer to do it at night. And basal testing is done for 24 hours. 24 घंटे के लिए mm, बेसल टेस्टिंग होता है. और उसको मैं 12 12 घंटे में दो दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ. आई थिंक नीरज जी डू 8 mm. hours और 12 hours.
I do the first is the overnight one, and then I divide the next. Like once I get up in the morning, say around 9 10 a.m. So around from 10 to 1 or 2 p.m. I do on the next day, and then I break it into 4 to 5 hours over the next 1 2 days, and that's how I So complete the 24 hours सो बेसल टेस्टिंग में आपको करना क्या है, आपको 24 घंटे फास्टिंग करना है. To fasting. test your Right, sugars, you have to fast for 24 hours, and we want to see because there is no bolus insulin. We are not eating, right? हम उस टाइम खा नहीं रहे हैं, right. हम bolus हाँ, insulin नहीं डाल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं हमारी basal insulin 24 hours में कैसे act कर रही है, right? right. Uh, और नीरज करते हैं एक बार 8 hours करके, then फिर another how many hours? four to 6 five hours. hours. हाँ, 6 hours. Yeah, करेक्ट. 4 to 6 hours, depending on my routine. Yeah, करेक्ट. एंड मैं 12 12 घंटे में करता हूँ. मैं रात को 10 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक विजल टेस्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट डे एक दिन के बाद फिर सुबह 10 के रात के 10 तक करता हूँ. तो दैट इज माई फास्टिंग टाइम. आई डोंट ईट एनीथिंग ड्यूरिंग दैट टाइम. yeah. So yeah, you can go ahead, Neeraj. So what happens once you start your basal test? Do you eat anything? You only have water? How Yeah, often you do can you? have water. Yeah, no, nothing that raises your blood sugar, no carbs, no high calorie food items, nothing. So you have to be fasting. You can have water, and yeah, uh, and during that phase, so basically, how will you know that your basal is correct? Because your sugar should not go up by more than 20 to 30 units, and any increase or decrease by that amount by more than 20 to 30 means your basal is not set correctly. So if you have eliminated other variables, like I said, like food and exercise, and you're just fasting in a simple state, so your sugar should not rise by or decrease by 20 to 30 units. So if your sugars are stable, that means your basal is set correctly. तो एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हाँ, हम बेसल टेस्टिंग अगर मैंने शुरू की 10 बजे और मेरी शुगर है अराउंड 110. माय शुगर आर हाँ. 110 at 10 p.m. Then at how often do I check, Neeraj, my sugars if I'm on Uh, glucometer? Yeah, if you're on a glucometer, you should be checking every hour so that you know कि every hour, at the end of every hour, how much your sugar is. And keep a log, like log it so you know at which hour your sugars raised or at which hour your sugar went down. So that will so by that you'll know at what to which are your basal is not set correctly or which are your basal is set correctly. So have a log of every single hour, and if you're and bet if better on a CGM, so you will not have that thing, and you can obviously look at the trends in on your CGM. So that will help. And I used to do it every 2 hours on a glucometer. And you have to be Okay. careful with CGM क्योंकि CGM में variation होगा. So हाँ. once I have done it on CGM, but वो बहुत ही accurate था. I made sure that my CGM, I'm doing it both on CGM and glucometer. My CGM is Right. accurate, Right. but I would suggest to do it on a glucometer. And Glucose. I Yeah. do it every 2 hours at night. You can do it every 1 hour, but two Yeah. hours at night is more comfortable for me. So I have to set up an alarm for every 2 hours, wake up, check my sugars, write my Yeah. reading, and sleep. If so the first time I was doing basal testing, I saw a difference of around 30. And Yeah. मैंने उसको I stopped that doing that. मैंने उसी टाइम रोक Yeah. दिया basal test, and then I adjusted my dose. So Neeraj, do you prefer completing your cycle and then adjusting, और जैसे ही आपको difference दिखता है आप उसको वापस करते हैं? No, I log it first, and then I will try to confirm it again at the same time next day. Maybe I just try to confirm it once more, and then I will make changes to my basal insulin. तो जो भी लोग सुन रहे हैं, आप जब बेसल टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, आपने अपना फास्टिंग स्टार्ट किया, आप शुगर्स हर 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद ग्लूकोमीटर से लिख रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप मतलब इट्स लिटिल डिफिकल्ट, मतलब रात को उठना हर 2 घंटे बाद, राइट? इट्स नो वन लुक्स फॉरवर्ड टू दैट नाइट कि भैया मैं Yeah, हर 2 घंटे बाद उठूं, बट it's very important. Matlab, it will help you. The basal testing we had done has helped us over a long period of time, right? So right. Yeah. definitely this will be worth it. And we have some questions.
can we do this for kids and keep them hungry for 5? You can do this for kids, Bhuvan. Yeah. फास्टिंग पीरियड की ड्यूरेशन आप शॉर्ट कर सकते हैं. यू कैन डू 6 hours फास्टिंग 4 times, or you can do Right. 4 hours fasting. But you can do it definitely for kids and see how their bases are affected. This will help you understand कि एक बेस फिगर क्या है बेजल का, एंड उसके ऊपर नीचे आप जाएंगे फ्यूचर में. Right. Rajika is testing through CGM. CGM से you can test. You have to make sure there is no fluctuations in CGM, और ग्लूकोमीटर की वैल्यू बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए. बट आई वुड सजेस्ट कि CGM एंड ग्लूकोमीटर दोनों से you should do your blood sugar testing. Right. Yeah. Just to confirm that you're on the right track. Yeah. Yeah. Kamla is asking how to do it during the day. We'll come to the day part. And yes, night time is clear. So let's yeah. And also Rajiv ji has a question with basal testing apply to Rhizodec. Rhizodec is a mixed insulin, right? Uh, basal testing is only for your long acting insulin. इसमें आप mix insulin नहीं कर सकते because उसमें आपका bolus आ Mhm. जाएगा. So Yes, कुछ this is only कुछ for पार्ट your long. इनिशियली दिया जाता है उसमें, तो so only on a bolus basal regime you should be testing your basal insulin. Is what I Okay, feel. got it. So day one we are finishing. मैंने रात को 10 बजे लिया. I have taken it at 10 p.m. and मैं सुबह उठा 8 9 o'clock. I didn't have my breakfast and मैंने 10 बजे 10 o'clock in the morning I have stopped my basal testing and then I've taken my breakfast. तो मेरा एक बैच हो गया 10 to 10. नीरज can tell Right. how he does Yeah, till the what same. time. Like I finish my 8 to 9 hours, like the overnight sleep. Then I will take my meal. If I'm taking, or maybe if I wish to continue and go on till 1 p.m. or whatever window you're comfortable with. Um, of late, I've not been. I'm not a breakfast person, so I'm comfortable if I can even fast till 1 p.m. So when I do a basal testing, I keep it on till 1 p.m. And then I take my lunch at that time. So तो whatever आप you're comfortable, ग्रेट. सो नीरज का ये कहना है आप जब भी कंफर्टेबल हो उस टाइम पे आप अपना सुबह बेजल टेस्टिंग कर सकते हैं खत्म, बिकॉज और कभी भी आपको हाइपो आए यू हैव टू एंड योर बेजल टेस्टिंग वहीं पर. right? Yeah, आपको हाइपो आ रहा है, डोंट कंटिन्यू विद बेजल टेस्ट. आप उसी के टाइम बेजल टेस्ट खत्म कर दें और अगले दिन से वापस से स्टार्ट करें बेजल टेस्ट. right. हाइपो के टाइम पे यू हैव टू टेक शुगर. Yeah, हाँ. सो कमला 10 to 10 मैं 12 घंटे करता हूँ, और नीरज आप 8 घंटे भी कर सकते हैं. जैसे मैंने 10 बजे किया और सुबह हाँ, 6 बजे रोक दिया. ठीक है, आप 8 घंटे कर सकते हैं. सो नाउ मैं खाना खा लिया. नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठूंगा, नेक्स्ट डे आई हैव हैड माय मैं आई विल डू माय अर्ली ब्रेकफास्ट. आई विल डू माय yeah, ब्रेकफास्ट एट अराउंड 6 or 7 a.m. 6 a.m. I will do my breakfast if I need to eat. Then I'll start my second basal test from 10 a.m. to 10 p.m. in the night. तो मैं yeah. सुबह के 10 के रात के 10 तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा. आई विल बी ऑन वाटर एंड आई जस्ट टेस्ट माय बेजल. अगर इतना लंबा फास्टिंग पीरियड बहुत मुश्किल है स्पेशली बच्चों के लिए, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा लाइक नीरज कैन एक्सप्लेन. ही डज डिवाइडेड. Yeah, so I divide it. So basically, if you have had your breakfast at around whatever time, so wait for 3 4 hours, like 4 hours. So once your bowl, you'll obviously taken your bolus and your food has digested. So wait for 4 hours and then start the second batch of your basal testing. So then again you can continue your fasting for 5 to 6 hours. And in that again, as we did about the night time, the same things need to be followed again for that basal test, तो like आपको हर fasting, 1 2 no घंटे physical बाद exercise. ग्लूकोमीटर से अपनी शुगर चेक करनी है. आप 6 Hmm, घंटे बाद उसको रोक सकते हैं कि मैंने दोपहर को 3 बजे 4 बजे रोक के फिर मैंने लंच कर लिया. तो वो right, रीडिंग्स, तो आप एक अपना चार्ट बनाएंगे. पहले दिन right, मैंने चार्ट चार्ट बनाया 10 a.m. to 10 p.m. मैं अपनी वैल्यूज लिखता रहा. फिर मैंने नेक्स्ट डे फिर मैंने वापस सुबह 11 बजे से लेके दोपहर के 3 4 बजे तक का चार्ट बनाया. फिर उसके अगले दिन मैं शाम के 4 बजे अपना बेजल टेस्ट वापस से स्टार्ट करूंगा रात के 10 बजे तक. right. उस टाइम पे फास्टिंग होगा, तब मैं लंच और जल्दी कर लूंगा. तब मैं 11 बजे लंच कर लूंगा और हाँ, मैं 3 बजे अपना बेजल टेस्ट स्टार्ट करके वो रात के 10 बजे तक करके
So basically 3 दिन में और 4 दिन में यू हैव, और एक दिन में, 2 दिन में, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, यू हैव टू Hmm. फास्ट फॉर 24 hours and you have to write down all your sugar values in that period of time. Right. And then accordingly, you can take a decision on which uh, part of the basal needs to be changed, and accordingly, you can arrive at your total basal requirements. कि कितना basal लेना है. So and like we said, you should avoid doing any exercise or eating anything or during that period of time. और hypo आया तो you have to stop and do it again. So, और yes. hyper आया, so you have to, and now let's come to the analysis part of it, right? So you have done your basal testing, आपने सारी values लिख दी, आपने 24 घंटे तक फास्टिंग करा, लिख ली सारी values. Now Hmm. how do I analyze that, Neeraj? सो बेसिकली अगर आपने अपना सब रीडिंग्स देखा और देखा कि समझो 12 से 1 बजे रात को आपका 20 या 30 से ज्यादा बढ़ गया, समझो 70 या 80 से बढ़ गया, तो तब आपको आपका बेसल चेंज करना पड़ेगा. सिंस आपका बढ़ रहा है तो आपको बेसल डोज बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो जो फ्लक्चुएशंस है और कम हो जाए, और 20 to 30 के रेंज में रहना चाहिए आपका फ्लक्चुएशंस. तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना बेसल बढ़ाओगे, बट एकदम से मत बढ़ाना कि आपको वापस हाइपो में जाना पड़े. थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा. एंड इफ आई सी अ ह्यूज जंप, मतलब अगर मैंने देखा कि भैया मेरा तो 30-40 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो रहा है बेसल, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे उस टाइम, बॉडी पे आपने ना राइट. खाना डाला है ना आपने कुछ डाला है. तो अगर मैं 110 पे हूँ और मेरा 140 पे बढ़ रहा है रात में, तो आई नीड टू सी कि अच्छा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है. आई विल कंसल्ट विद राइट. माय डॉक्टर एज वेल, एंड कि इफ आई नीड या. टू इंक्रीज माय डोज और नॉट. या. तो वो आप जरूर करें. और अगर हाइपो भी हो रहा है तो इमीडिएटली आई टेक माय शुगर, आई स्टॉप माय बेसल टेस्ट, एंड देन मैं एक डोज कम या ज्यादा करके देखूंगा, एंड आई टॉक टू माय डॉक्टर कि भाई यस. मेरा क्यों ऐसे हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है. राइट. If I'm seeing, as Neeraj ne kaha ki if my sugars are spiking, right, I'll increase my dose. If my sugars are, if I'm getting a hypo, then I'll decrease my dose. uh, but this has to be done 2-3 times to see कि what is your perfect dose, right? मतलब मैंने एक बार बेसल राइट. टेस्ट करा, डॉक्टर ने कुछ सजेशन दिया, या if I am trying out something, I again have to do this basal testing to see कि राइट. if या. the new dose is correct or not. यस. यस. जो आपको फ्लक्चुएशंस का प्रॉब्लम हो रहा था, अगर वो बेसल से ठीक हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू हैव टू फाइंड अदर कॉजेस फॉर इट. सो कॉज कैन बी डिफरेंट. आपका अगर नाइट टाइम होता है तो आपको डॉन फिनोमिनन हो सकता है, डॉन सोमियोगी फिनोमिनन. इफेक्ट हो यस. सकता है, दे कैन बी. राइट. बट our purpose of doing basal testing is to get your sugars in range, not to have hypo and hyper with your basal. This is the aim. राइट. And यस. basal testing will help us detect any discrepancies in that. राइट. तो यस. उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग basal testing करते हैं. So we have some questions. If we are completing basal testing in 3 days, can we exercise on the day 1 and day 2 after stopping basal testing on the first and second day? Yes, definitely you can. आपने basal testing रोक दिया है तो आप यस. खाना भी दे सकते हैं, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं उस दिन पे. सब कुछ We नॉर्मल हो जाएगा. यस. we just make sure कि जो 24 आवर्स का पीरियड है उसमें एक्सरसाइज और फूड का इफेक्ट ना आए. तो वी ट्राई एंड मेक श्योर देयर इज सफिशिएंट गैप उसमें, कि अगर खाना खा रहे हो तो 4 घंटे का गैप है, एक्सरसाइज या वॉकिंग भी कर रहे हो तो भी कुछ घंटे का गैप है, सो दैट दैट डजंट अफेक्ट आवर रिजल्ट्स. राइट. यस. राजीव जी का भी सवाल. हाँ, टेक इट नीरज, गो अहेड. With Rhizodec dose in the morning, the long-acting portion acts for about 20 hours. So if the morning sugar after a night-long fasting is in range, it should indicate that the long-acting dose is in order. I think still I would want to avoid on a kind of a mixed insulin. It should only be done on a basal insulin, proper basal insulin is what I feel. What are your thoughts on this, Rohan? वी कांट से दैट लॉन्ग एक्टिंग डोज इज इन ऑर्डर, क्योंकि इसमें शॉर्ट एक्टिंग भी होगी, राइट? सो वी कांट से कि Right.
ओनली लॉन्ग एक्टिंग पार्ट सही है, मतलब इफ राइजोडेक इज वर्किंग एंड आप बेसल टेस्टिंग करके वो सही कर रहा है, तो यू कैन से कि राइजोडेक इज फाइन फॉर यू, यू कैन गो ahead and do that. But that also has a short acting insulin with it, right? तो उसमें हम ये we can't say the basal part of it is correct. We can say कि Correct, हाँ right, मिक्स इंसुलिन आपके लिए ठीक है, but we can't say कि उसका एक पार्ट ठीक है आपके लिए, that we cannot define it like that. right. uh, कमला का क्वेश्चन था, can this be done? This can be done only at nights as well, but that will be night basal testing for you. That won't be the entire 24-hour basal testing. वो सिर्फ नाइट का basal testing रहेगा. My daughter numbers change at night every day. She at times wakes up with high numbers too. Yes, that can be a little tough because maybe अभी कल परसों मेरे को भी हाइपो आया था रात में, कभी हाइपर भी आता है. So you have to. What I have done is that I take my lunch. जब भी मैं डिनर लेट करता हूँ, I face a lot of issues. So Yeah, whenever I do my dinner at 7 p.m., right? सोने से पहले तक माय शुगर्स कम इन स्टेबल एंड आई कैन टेक अ सेकंड करेक्शन डोज एज वेल. जैसे मैंने 7 बजे खाना खाया एंड आई सी कि 9 बजे भी मेरी शुगर्स आई हैं, तो आई कैन टेक अ huh, स्मॉल करेक्शन डोज 9 p.m. एंड स्लीप बाय 11 or 12 p.m. So that works for me early dinner. Any advice, yeah. Neeraj, on if someone is complaining of fluctuations at nighttime sugar levels before they sleep? Uh, Before they sleep. So maybe you can have a low carb dinner because some people are more sensitive to carbs in the night. Uh, I am more sensitive to them in the morning. So basically have your early dinner so you can accordingly even analyze your dinner and then get to the reason for it. एंड कमला, अगर आपकी रात में शुगर्स फ्लक्चुएट कर रही हैं, इफ योर शुगर्स आर फ्लक्चुएटिंग एट नाइट, आई प्रेफर टू सी माय प्री स्लीप शुगर्स लेवल. सोने से Yeah, जस्ट पहले मेरा कितना शुगर लेवल है, एंड उससे मेरे को पता लग जाता है कि रात में मेरी शुगर कैसे जाएगी. तो आप वो भी right. टेस्ट करके देख सकते हैं. कमला, आप Okay. एट स्पेसिफिकली एट व्हाट टाइम रात में डज द शुगर लेवल स्पाइक एंड बाय हाउ मच? And Yeah, meanwhile, because we'll take yeah, Deepika's because if it's question. not dawn phenomenon as she's saying, so it's either Mhm. because of the dinner or it or I don't know because it It depends can on what be. time she's having the dinner. Uh, it could So also be basal due to a testing lot of hormonal will issues. Uh, sort out a lot of things. Yeah. yeah, because as children are growing up, it could also be related to a lot of hormonal changes. Is when because you need a lot of basal insulin at that time also. So you Correct. need to cancel those things as well. So Kamala, best would be to do a basal test and see how much is the how is the basal performing, right? तो वो कर सकते हैं आप. So yeah, Kamala, that I would advise कि आप हर 1 घंटे बाद चेक करें शुगर्स, रात के 10 से लेके सुबह के 6 बजे तक, और बहुत अर्ली डिनर करा के, ताकि बेजल का पता लग जाए कि वो कैसे बिहेव कर रही है. देन वी कैन फिगर आउट कि Right. ये बेजल का इशू है या फिर ये आपकी जो नॉर्मल डोज है खाने वाली उसका इशू. Yeah. So there's Deepika's question also. या If my post dinner is 250 and morning fasting is 110, which is quite okay, should I adjust basal? I think you need to do a basal testing in the night because if your post dinner is 250 and you're waking up at 110, so that means your basal is getting you low. So on days when your post dinners are completely fine, say 130, 140, you might wake up with a very low number in the morning. So I think it's better to do a basal testing because it looks like that you're getting a lot of basal in the night, maybe more than your requirements. Because if you're waking from 250 to 110 after post dinner, you will तो need to do a basal testing. and should I adjust basal depends on you depends on how is your basal fluctuating or not. अगर आपका पोस्ट डिनर 250 है, तो यू मे नीड टू एडजस्ट योर डिनर इंसुलिन, राइट? बिकॉज Yeah, before sleeping I think it should be around 120,
या उससे नीचे. 90 to 120 is what I prefer. And बेजल टेस्टिंग से बेसिकली यही पता लगता है कि मेरे को बेजल एडजस्ट करनी है कि नहीं. दैट्स व्हाई वी डू बेजल टेस्टिंग, कि प्रॉब्लम मेरी बेजल के Right. साथ है या कुछ और प्रॉब्लम है. सो दिस इज Yes. व्हाट वी ट्राई एंड चेक फ्रॉम बेजल टेस्टिंग. I ज्योति हैज. think given your 250 reading, first you can adjust your try to get your post dinner under range, and then you can work on the basal accordingly from there. राइट. बहुत लोग का होता है कि पोस्ट डिनर हाई होता है लेकिन सुबह फास्टिंग सही होती है. जो कि पीपल थिंक इज फाइन, राइट. बट वी बेजल टेस्टिंग से आपको बीच का फ्लक्चुएशंस पता लग जाएगा कि वो 250 से Right. 300 गया, कि वो Ah, 60 70 आया, फिर वो ऊपर आया. सो विल बी एबल टू सी right. दैट फ्लक्चुएशंस. Exactly. Jyoti is Yes. asking, my son is on 2GO. The numbers were very good, but from the last 2 3 days, his fasting is above 200 daily. Should I increase 2GO dose or it's dawn phenomenon? Again, Jyoti, कुछ कुछ दिन ना मेरी भी फास्टिंग ज्यादा आ जाती है. दैट कैन बी. Mm. अभी वेदर चेंज भी आ रहा है तो हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो या कुछ इन्फेक्शन हो या फिर खाने में कुछ ऊपर नीचे हो. 2GO डोज आप एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह करें. डॉन फिनोमिनन या फिर इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए आप यू शुड डू बेजल टेस्टिंग. आप अगर एक बार ये टेस्टिंग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस टाइम पे एग्जैक्टली स्पाइक हो रहा है. अगर सुबह 5 6 बजे हो रहा है तो वी कैन सी गेट मोर इन्वेस्टिगेशन डन कि ये डॉन है कि नहीं. और हाँ, डॉन वीक के लिए वो टाइमिंग आपको पता करना पड़ेगा कि कब बढ़ रहा है वो. सो आप एक बार बेजल टेस्ट करो, देन आपको पता लगेगा कि 2GO डोज ऊपर नीचे हो रही है या फिर देयर इज सम इशू. अगर 2GO डोज ऊपर नीचे हो रही है देन डेफिनेटली गो एंड एडजस्ट योर 2GO डोज. Yeah. Kamla is saying we have split it into two now. Agar if you are splitting your dose, then you have to take your dose at the same time and then again do your basal testing. Yeah. Deepika is saying I never get post dinner low or normal, which is fine. But basal testing से आपको जब आप सो रहे होते हैं तो उस टाइम का आपको पूरा पता लग जाएगा कि बेजल सही से एक्ट कर रही है कि नहीं. इनफैक्ट दिन में भी आप जब भी बेजल टेस्टिंग करेंगे, पर्पस बेजल टेस्टिंग का है कि आप खुद से जाने कि मेरी basal dose is correct or not. By Yeah. correct, we mean not fluctuate more than 20 to 25. Right. Yeah. Jyoti saying around 4. Then I think एक बार ज्योति आप एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट करें. अगर अराउंड 4 वो स्पाइक कर रहा है तो हो सकता है इसमें डॉन हो, बट वी नीड टू चेक दैट आउट. आपको एक बार फिर से रात को आप टेस्ट करें. सुबह 4 बजे 5 बजे 7 बजे टेस्ट करें, देखिए कितना फ्लक्चुएट कर रहा है. एंड रात में आप सोने से पहले चेक करें. देन वी कैन गेट मोर इन्वेस्टिगेशन डन. Does basal testing will help to find out if basal works 24 hours for my body? Exactly, Saurabh. So when I did my basal testing, I saw that I used to take my Lantus dose at 10 p.m. and अगले दिन शाम के 6 7 बजे मेरी शुगर स्पाइक करती थी. बेजल डोज पे अराउंड 30 40 का मेरे को स्पाइक दिखता था एंड आई हैडंट टेकन एनीथिंग. सो माय लैंटस ओनली वर्क फॉर 18 आवर्स इज व्हाट आई हैड अ कंक्लूजन फ्रॉम माय बेजल टेस्टिंग. मेरे को पता लग गया कि उस Right. टाइम बंद हो गया और वो स्पाइक कर रहा है. देन आई हैड टू स्प्लिट माय लैंटस डोज. then Yeah. I again did a basal testing and उसके बाद I was able to see that कि हाँ स्प्लिट करके मेरे को बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं. सो ग्रेट पॉइंट. आई थिंक दैट you can also check how much time is your basal dose acting. जो उसका एक्शन टाइम है वो सही है कि नहीं है. My doctor recently changed to 2GO through my post dinner comes in the normal range but it starts rising around 1 3 a.m. My fasting is around 100 and cannot understand. Uh, I think 2GO is a good insulin and 1 or 3 a.m. पे rise कर रहा है as seen from the CGM, right? And fasting ठीक है. तो आप Deepa, you can do a buddy call with me or with any of our experts, and we can discuss in more details, as in to why it's rising and kitna rise kar raha hai and what is that number, and
डिनर के बाद क्या रहता है, वी हैव टू सी लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स. बट Yes, how much Bharat. can Yeah. we rise at 1 3 a.m. because early morning to fasting is okay. Rajiv ji is saying mixed insulin may Rhizotec has 30%, 70% long acting insulin works for a longer duration. Hmm. Yes, Rajiv ji, if you want to do it on Mixstart, you have to see how is Mixstart working for you. Yeah. I it would be like not basal testing, it would be mixed insulin testing in that sense. तो ऐसे भी Right. कर सकते हैं. There is no कि दैट यू कैन नॉट डू इट. यू कैन डू इट बट वो आपकी मिक्स इंसुलिन के लिए हो जाएगी एक तरह से. बट यू हैव टू मेक श्योर कि वो खाना प्रॉपर रहे, बिकॉज आपने एक दिन मिक्स इंसुलिन लेके खाना कुछ और खाया, नेक्स्ट डे कुछ और खाया, तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो मील सही टाइम पर हो एंड वो प्रॉपर गैप हो फॉर दैट टेस्टिंग. Yeah. एनी मोर क्वेश्चंस वी हैव? Alright. So, Neeraj, would you like to do a summary of our session today? Basal is one of the most, like we said at the start, is one of the most underrated insulin that we have. We normally tend to focus on bolus, where basal should be given equal emphasis. So, basal insulin is your background insulin. It keeps your sugars in check throughout the day. It's a long-acting insulin. It works for around 24 hours to 30 hours, depending on the kind of basal insulin you use. Again, so basal testing is you test your basal insulin by eliminating other variables that affect your blood sugars, like food, exercise, and other variables. So when those are eliminated, you're trying to check that your basal insulin is correct. So you try to fast. Either you do it at a stretch of 24 hours, or you divide those 24 hours in 3 to 4 batches. Like you could do the first overnight, then say like 6 hours in the morning, and then afternoon and evening accordingly. And then once you and you when you're doing the testing, you keep on logging your sugars every 1 hour or 2 hours, as Rohan said. Even you could check it on a CGM, but it's always preferable to do it on a glucometer, to verify it on a glucometer. And once you have that data and the kind of logs that you have put in, you can accordingly make those changes. So when do you make those changes is when your sugar shouldn't vary more than plus or minus 20 to 30 units. And then accordingly you can make changes to your basal insulin. Great. Thanks, Neeraj. Kamla is asking any suggestions for types of food before starting testing. Uh, you can eat, if you're eating a food which has carbohydrate, I think give a gap of 4 to 5 4 hours. hours. Yeah. और Yeah. फैट प्रोटीन जो भी आप ले रहे हैं कुछ भी, अगर मेरे को इतना लंबा गैप नहीं देना तो आई विल जस्ट, मतलब अगर मेरे पास 3 घंटे हैं तो मैं पनीर ले सकता हूँ, आई विल टेक सम, या फिर मैं कुछ कार्ब एप्पल या वगैरह कुछ ले सकता हूँ, उसके 3 घंटे बाद भी मैं टेस्ट कर सकता हूँ, विच इज Huh. फाइन. Yeah. अगर Yes. आपको कुछ थोड़ा सा स्नैक देना है तो, बट मेक श्योर कि 3 घंटे का तो गैप हो स्नैक में, और खाने से पहले एटलीस्ट 4 आवर्स का गैप हो. हाँ. एंड इफ यू आर खाली आप ईटिंग, प्रोटीन और फैट लोगे तो टाइम टाइम देना पड़ेगा अगर मैंने फूड को पिज्जा एडजस्ट खा करने में. लिया तो आप कम से कम आठ करना ही घंटे का नहीं है. गैप, मतलब डोंट ईट कि- समथिंग लाइक पिज्जा, विच इज अ गुड क्वेश्चन आई थिंक कमला हैज आस्क्ड कि हमने चार Yeah. घंटे का गैप बोला है. इफ समवन ईट्स अ पिज्जा एंड स्टार्ट्स टेस्टिंग आफ्टर 4 आवर्स, दैट विल नॉट वर्क, बिकॉज Right. उसमें बहुत ज्यादा फैट होता है, एंड दैट कैन स्पाइक इवन आफ्टर 5 आवर्स, राइट? सो Yeah. मेक श्योर यू हैव अ नॉर्मल डिनर. आप अगर रोटी Normal सब्जी ले food. रहे Yeah. हैं एंड उसके बाद यू कैन स्टार्ट इट. Right. सो थैंक यू सो मच. एंड आप में से किसी की भी पास कोई भी सवाल हो तो हमारे पास जरूर पूछें. एंड आप फेसबुक पे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Eggs are okay, Kamla. You can ask us any question on Facebook. You can reach out to us on our Yes. helpline, Buddy Project. उसमें we have diabetes educators and other experts. You can book a free call with them.
Um, Right. you can also ask any question in the Facebook and on our WhatsApp groups as well. And Neeraj and me are here to answer any of your doubts. And Nupur has shared a blog link as well. And anyone who has any doubts या कुछ चीज समझ नहीं आई, please go through that blog again. It explains in a lot of detail how you do your Yeah, it's basal very testing. helpful. Yeah. And any other question before we end this session? Let me check. Hope you didn't miss out on any question. Hmm, हो गए हैं सारे. Yeah, okay. Yes. Great. Any last word, Neeraj, before we end this? I think we are good. Anything that you would want to add, Rohan? That's it. So thanks everyone. We'll see you next workshop next Sunday. And basal testing is very important. It a lot of people don't talk about it that much, but from our personal experience, it has helped me a Exactly. lot. And same Yes. same I think for Neeraj, right? Yes, absolutely. Absolutely. And Very important. I'm Mary, my perfect dose is around 14 units, and sometimes when I feel sick, I increase it to 16 units. Uh, Yeah. Neeraj, what about you? Yeah, so yeah, one more thing I think we forgot to add here is your basal should approximately, that works for majority of people, is it should be one third of your total insulin requirement. So if you're But taking, it's not mandatory, matlab, not it should. mandatory, but it's somewhere around that it works. One third of your total daily requirements. On certain months, on certain days, you might even require more or less, but it should be somewhere around that. Yes. So my current But dosage is around 13 to 14. okay. So for me, I think my basal is around almost 50% of my total daily dose. So वो one third वाला rule होता Oh, नहीं because I eat a low carb food, right? So मैं right. for Yeah. my Yeah. food I Yeah. take 1 2 units. So it just varies for person to person. But there is no as such Okay. fixed rule that आपका उतना होना चाहिए. But it's a guideline Huh. as needed. Right. Yes. All right. So thanks everyone. We'll see you next week. Bye bye. Yes. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Bye.